Good morning, ninth class. We'll continue with our topic, the Russian Revolution or Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, in this segment, we'll proceed after the October Revolution and what change had come after this revolution. We will see this. So prior to this, we had seen that Prime Minister was dethroned and total power had come in hand of Bolsheviks. This much we have to learn. So Bolsheviks were totally opposed of private property. This was one of the main characteristics of them. And most industries and banks were nationalized in November, as we have read April thesis. We never forget कि April thesis had 3 points. Lands would be redistributed, then bank should be nationalized, and war should be ended. These 3 points we had discussed there. So most of industries had bank nationalized in November 19th century. This means that the government took over ownership and management. Now government is of whom? Bolsheviks. And land was declared the social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. Means the land has been redistributed, it has been taken away from nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of the large houses according to the family requirement. Simultaneously, the mansion which has been confiscated, taken away from the peasants by the nobility, they were be accordingly partitioned. Partitions means we can understand, सपोज करिए बहुत बड़े बड़े मेंशन हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, लोगों को ये रिडिस्ट्रीब्यूट मतलब अकॉर्डिंगली फैमिली के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ठीक है. सो दिस start happening and they banned the use of old titles of aristocracy. Old title czar, remember czar one of the title. ठीक है. czar इस तरीके के टाइटल क्या है, ये ले लिए गए, बैंड कर दिए गए. And to assert this change, new uniforms were designed. अब ड्रेस कोड was the वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द सोसाइटी की अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ड्रेस कोड जरूरी था. तो नए डिज़ाइन किए गए फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स एंड फॉलोइंग द क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड दैट इज Budenovoka that was chosen. Now Budenovoka you can see in this picture. This kind of hat, generally in India we also see some uniform patterns, such kind of hat were also you can say introduced, and many of you have worn in your childhood. So such kind of dress were introduced, and this shows the government and Soviet means had power at that time. So Bolsheviks party was renamed and the Russian Communist पार्टी. बोल्शेविक का नाम अब बोल्शेविक नहीं रहा, क्या हो गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain the majority. अब होता क्या है, देखिए, जो इनको विक्ट्री का नशा था वो नशा चूर हो गया, क्योंकि इनको लगा अरे अब तो हमारी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने कुछ शायद नहीं किया होगा, कुछ शायद मेजर्स जो थे इनके वो चेंज कर दिए होंगे. सो बोल्शेविक ने इलेक्शन कराए और इलेक्शन में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उनको वो फेल हो गए पूरा मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट लेने में. अब इसके पीछे के रीज़न हमें याद करने पड़ेंगे. why it had happened, why they were failed to take the majority support. So in January 1918, what happened, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. ठीक है, बोल्शेविक जो ने जो मेजर्स लेने चाहिए थे उन्होंने वो नहीं लिए और लेनिन ने क्या कर दिया, असेंबली को ही डिसमिस कर दिया. He thought that all the Russian Congress of Soviet were more democratic than an assembly elected in uncertain condition. इनको इतना तगड़ा, इतना मतलब एक तरीके से भ्रम हो गया कि अब तो सरकार हमारी है, डिसीजन हमने लिए हैं, अब इसमें क्या है, इसका इलेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पीपल आर विद अस. ठीक है, दिस काइंड ऑफ नोशन दे हैड विद देम. So in March 1918, despite of position,
Despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest एंड लिवस्टॉक, ब्रेस्ट लिवस्टॉक। यहाँ पर क्या किया इन्होंने 18 में, डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज, मतलब अपने जो पॉलिटिकल थे उनके उनके अपोज में ये लोग हुए। एंड बोल्शेविक मेड पीस with Germany, followed the Bolshevik became in the year that year the in that year the followed, and Bolshevik became only the party to participate in the election to all the Russian Congress Soviets, which became the parliament of the country. ठीक है, अभी अकेली ही पार्टी खड़ी रह गई जिसको कि इलेक्शन में आना था। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, तो यहाँ पर रशिया अकेला ही एक पार्टी स्टेट बन गया, वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द कंट्रोल, ठीक है, नोबडी वाज अलाउड टू द मेक यूनियन, तो दे वर अंडर कंट्रोल। द सीक्रेट पुलिस दैट इज कॉल्ड चेका फर्स्ट, द लेटर OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks, ठीक है। ऐसा इन्होंने सिस्टम एक वेब बना लिया है कि कोई बोल्शेविक को क्रिटिसाइज ही ना करे, मतलब एक तरीके से डिक्टेटरशिप लेके आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ इनका, अब मतलब इनकी पॉलिसीज रॉन्ग होने लगी ना, विच कुड बी अंडरस्टैंड बाय द common people. So many young writers and the artists relate to the party because it stood for socialism and for change. After October Revolution 1917, this led to the experiment in the arts and architectures. फिर क्या किया गया 1917 में, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स मतलब कुछ जो इनोवेशंस थे उनमें अगर चेंज किए गए, बट मैनी बिकेम डिसल्यूजन, लेकिन उनमें लोगों को, डिसल्यूजन का मतलब एक तरीके से भ्रम ही बना रहा। वाई? बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप। सेंसरशिप कहते हैं इट इज़ अ पावर विद मोनार्क किंग और गवर्नमेंट विच कैन बी यूज्ड बाय देम इन पर्टिकुलर मेजर्स। सो पार्टली encouraged सो पार्टली इन केस, मतलब यहाँ तक आपका ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो है सिविल वॉर शुरू होगा। अब सिविल वॉर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि उसको अलग टर्म में ही लेंगे। तो till here we complete this video and we leave here only because small segment if you are discussing they can be understandable. So we revise the points what we have read in that particular, what change after October, ठीक है। अक्टूबर में रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए, पूरी पावर किसके पास थी, इट वाज विद बोल्शेविक्स। उन्होंने बैंक नेशनलाइज कर दिए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, यूनिफॉर्म्स जो है पैटर्न चेंज कर दिए, न्यू स्टाइलिश कैप वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। अब बोल्शेविक ने क्या किया, अपनी पार्टी का भी नाम चेंज कर दिया। पार्टी का नाम हुआ RCP यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। 1917 में उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए। इलेक्शन कंडक्ट कराने में वो इतने मतलब उन्होंने कोई बिलीफ नहीं दिखाया। उन्होंने सोचा कि वी कुड ईजीली वन द इलेक्शन, तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड पार्लियामेंट वॉज डिसमिस्ड बाय, असेंबली वॉज डिसमिस्ड बाय लेनिन व्लादिमीर, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने से क्या होता है कि अब उनको, उन्होंने पावर में तो बने ही हुए थे लेकिन उन्होंने सीट नहीं दी होगी, ठीक है। सीट नहीं दी तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक पुलिस और अपना एक सिस्टम बनाया, वन पार्टी में रह गए। और वहाँ से क्या किया, इफ़ एनीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग बोल्शेविक्स तो उनको अरेस्ट किया जाने लगा, ठीक है। अरेस्ट किया जाने लगा, अपने एक नया प्रोपोगेंडा शुरू किया दैट वाज ऑफ यू कैन से रिलेटेड विद आर्किटेक्चर्स एंड आर्ट्स, जिसको कि एक तरीके से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इल्यूजन ही रहा। इसमें भी गवर्नमेंट का सेंसरशिप था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स वी कैन से कि द राइट ऑफ राइटिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, इट वाज टोटली इन हैंड ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं दी गई। तो ये दिखा कर कि देखो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे टुक ऑल द चार्जेस, सेंसरशिप अपने हाथ में ले ली। और इससे क्या हुआ, पार्टी को इनक्रेज किया गया, मतलब पार्टी को अच्छे कामों के लिए प्रोपोगेट करने का एक मेथड निकाला गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन।
Now here some things are given, like October Revolution in countryside, what was happening there, landlords का क्या हो रहा था. You will take the reading yourself. Okay, if you have any problem, we'll discuss later. So till here we finish this video.